Now, the third question at the screen right now, you can see you have to calculate domestic income. So try to solve this one. If you are solving this at your home, you can pause your screen and solve this one. So in this question, again, domestic income. So I have explained to you previous also that domestic income is known as net domestic product at factor cost. So students, that means you are required to calculate NDPFC. Now, make formula first. So what you want to calculate, write it on your left hand side. This is you are required to calculate. What you have been given? So look, you have been given gross national product at factor cost. Now use those 6 basic points that I explained to you. You must know those 6 basic points. I explained to you first point, if you want to calculate net, gross minus depreciation. Second point, if you need gross, then net plus depreciation. Third point, for factor cost, market price minus net indirect taxes. For market price, factor cost plus net indirect taxes. For national level, domestic plus net factor income from abroad. And for domestic, national minus net factor income from abroad. So students, if you don't know these conversion, so it is required to watch the first video of this topic part 1. So if you don't know that, then it will be very difficult for you to solve such questions. So I request you to watch that part 1 first before doing such questions. Now, what you are required here, look, gross and this one net, NG. So look from 1 to 6 where you have been asked. So look the same, NG minus depreciation. So formula says minus depreciation. Now domestic and national. So national को domestic convert करना है. That means minus net factor income from abroad. And now you also note that net factor income from abroad, formula for this is factor income from abroad minus factor income to abroad. Now factor cost to market factor cost, so it is same, so no need to do any further. अब आप क्या करें, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दें. जीएनपीएफसी गिवन है आपके पास 2700. डेप्रिसिएशन, सो लुक वेयर द डेप्रिसिएशन. तो यहां पर डेप्रिसिएशन तो कोई वर्ड लिखा ही नहीं है, बट जब आपको थ्योरी पढ़ाई थी तो बताया था कि रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल, कि जो भी आपने फिक्स कैपिटल का रिप्लेसमेंट किया है तो वो भी आपकी एक प्रकार से डेप्रिसिएशन हुई, क्योंकि वो नॉर्मल वियर एंड टियर में चली गई. सो 150 विल बी कॉल्ड एज योर डेप्रिसिएशन. नाउ माइनस NFIA. NFIA मैंने बताया फीफा माइनस फीटा. तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 150 एंड टू अब्रॉड 180. एंड बस ये दो ही काम करने थे और कुछ है नहीं. अब आप इसको सोल्व करेंगे तो आप प्रॉपरली इसमें से माइनस करेंगे तो योर आंसर इज 2580. This is the solution of this question. This has been given as rupees in crores. So don't forget to write rupees crores if it is given. So this is the solution of question number 5. Note it down in your notebook if you have not done yet. Now students, solve this question as this is the same question as it was the previous one, but one more thing you need to calculate here. So you need to calculate national income also. So domestic income, I just explained to you what is domestic income now. So domestic income is net domestic product at factor cost. And what is national income? National income is known as net national product at factor cost. So do remember this, that domestic income is termed as net domestic product at factor cost, and
national income is termed as net national product at factor cost. So try to solve this one, and don't forget to pause the screen if you are watching this video later on. So pause your screen and try to solve this one. When you solve, to check your answer, you can start your video again. Now check your solution, how you have solved it. So first of all, you need to calculate in part A, net domestic product at factor cost. What you have? Gross domestic product at market price. Look at this. You have been given gross domestic product at market price. Now convert it. So gross to net. Gross net minus depreciation. Now domestic cancel, production cancel. Now only FP to FC. Now FCMP minus net indirect taxes, and this is being calculated as indirect taxes minus subsidies. So now put the values in the formula. GDP MP given as 70,150. Depreciation, look students, this consumption of fixed capital known as depreciation. So further you should know that this is given as 3,100 minus indirect taxes and subsidies 4,000. So if you solve this one, and it will be equals to 65,800 or 50. This is the final answer of your domestic income. Now students, second part, net national product at factor cost. अब इसको सोल्व करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं. एक तो आप अपना बेस जीडीपी एमपी ही लो जो पहले आपने लिया हुआ है. आप एक तरीका तो ये हो सकता है कि आप नेशनल इनकम निकालने के लिए एनएनपी एट एफसी के लिए जो आपके पास जीडीपी एट एमपी है उसी को ले लो. तो माइनस डेप्रिसिएशन करना पड़ेगा, प्लस एनएफआईए करना पड़ेगा और फिर माइनस एनआईटी करना पड़ेगा. एक तो ये है. दूसरा ये है कि आपने जो ऊपर निकाल लिया इस वैल्यू को भी आप यहां रख सकते हो, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. अब आप देख रहे हो इसमें सिर्फ एक ही चेंज है, ओनली वन चेंज इज देयर. दिस इज नेशनल लेवल, दिस इज डोमेस्टिक. सो डोमेस्टिक टू नेशनल ओनली 10 एनएफआईए वी विल एड इट. एनएफआईए अगेन यू नो, factor income from abroad minus factor income to abroad. So 65,850. ये वाली जो वैल्यू ऊपर आई है इस वैल्यू को आप लग दें और प्लस करें फीफा. फीफा आपके पास है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 800, फीटा है 300. अब इसमें आप 500 प्लस कर दें तो 500 प्लस करने पर आंसर आता है 66,350. एक तरीका आपके पास ये था. तो बेटे आप किसी भी मेथड से कर लो, या तो आप इस वाले मेथड से करोगे या इस वाले से जो मैंने बताया, दोनों से आंसर आपका एक ही आएगा क्योंकि उसमें भी वही कैलकुलेशन जाएगी. तो दोनों ही तरीके से एक ही सॉल्यूशन इसका होता है. तो आपने किया है, आप चेक कर लें, डाउट है तो देख लें. नाउ स्टूडेंट्स, दिस इज सम अपग्रेडेड क्वेश्चन. सो रीड केयरफुली व्हाट यू आर being asked to calculate. So this is not as the previous one, so you have to put the values in this and you can calculate this as in previous formula also. So try to solve this one and pause the screen. After some time, when you complete your solution, you can start the video again. Now students, in these kind of questions, try to stick the formula that I told you. Now, look the two main things in this, what you have been given here. The one thing you have given is GNP at MP. Another one is NDP FC. So make the formula on the basis of these two. You have
नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इक्वल्स टू ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब ऑन द बेसिस ऑफ दो 6 पॉइंट आप अपना फॉर्मूला बनाइए। नाउ ग्रॉस टू नेट माइनस डेप्रिसिएशन, नेशनल डोमेस्टिक माइनस NFIA एंड NFIA you know factor income from abroad minus factor income to abroad. Now MPFC minus NIT and NIT is indirect tax minus subsidies. So in this question, students, what you are asked to calculate, you are asked to calculate indirect taxes. Now in this formula, where are your indirect taxes? So these are your indirect taxes. That means you need to calculate this indirect taxes. So इस इनडायरेक्ट टैक्सेस को आप क्या करें, एक्स लेट कर लें और जो भी गिवन है उनकी सारी वैल्यूज आप पुट कर लें। तो जहां जहां जो है उसको आप वैल्यू को पुट कर लीजिएगा और आपका आंसर आ जाएगा। कैसे? तो एनडीपीएफसी देखिए कितना है, 55,915 इक्वल्स टू जीएनपी एट एमपी 58,350। नाउ डेप्रिसिएशन कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, बेटा डेप्रिसिएशन बोलते हैं इसको। अब उसके बाद डेप्रिसिएशन है आपके पास 1625। देन फीफा, फीफा आपके पास फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है 625 माइनस फीटा, फीटा है आपके पास 865। नाउ इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस को एक्स लेट कर लें माइनस सब्सिडीज, सब्सिडीज गिवन है आपके पास 1540। अब आप इसमें एक्स के लिए सोल्व कर लीजिएगा, प्रॉपर अपनी कैलकुलेशन करेंगे, आपका आंसर आपके पास आ जाएगा। तो अगर आप ठीक से सोल्व करेंगे तो आपका पास सारी वैल्यूज लोगे तो फाइनल आंसर जो होगा दैट विल बी ₹2590। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो अब आप कैलकुलेशन पूरी कर लें, जो भी ब्रैकेट की वैल्यूज है उनको देख लें और इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो बस जो भी चीज गिवन नहीं होती है उसको आप एक्स लेट करो और सभी जो जो चीजें गिवन है वैल्यू पुट करो, अपना आंसर निकाल लो। इन सबको माइनस की वैल्यूज को प्लस, वो प्लस माइनस तो बेटा कर ही सकते हो, ये कैलकुलेशन सिखाने का तो नहीं है हमारा काम। Now the next question is at your screen, you can see calculate factor income to abroad. So अब आप अच्छे से देखो आपके फॉर्मूले में कहां ये वैल्यू यूज होती है, उस जगह पे आप फैक्टर इनकम टू अब्रॉड रख के उसको एक्स मान लें और जो भी गिवन है उसको वैल्यू को पुट करें। तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और अपने आप सोल्व करने की कोशिश करें, जब नहीं कर पाओ तब आप वीडियो को प्ले कर लेना। Now verify your answers if you have done it. So now I am writing the formula first. Again the same procedure will be followed. First GNP at MP you have, so GNP at FC. Another one NDP MP, NDP at MP. Now net, gross net plus depreciation, domestic plus NFIA. NFIA you know, FIFA minus FITA, MPFC minus NIT, you know, indirect tax minus subsidies. So what you are required to calculate here, you are required to calculate factor income to abroad. बेटा ये जो सर्कल किया है ये वैल्यू आपको इस बार निकालनी है, तो इसको आप एक्स लेट कर लो और जो भी गिवन है उसको पुट कर लो। तो आपके पास है 4280 इक्वल्स टू 3700 प्लस डेप्रिसिएशन 480 प्लस फीफा, फीफा है आपके पास 400 माइनस एक्स, एक्स नहीं है क्योंकि फीटा, माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस 100 एंड सब्सिडीज 80। अब आप इसको पूरा सोल्व करेंगे, प्लस माइनस करके कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास आंसर आना चाहिए, दिस इज 120।
नहीं सॉरी 280, this is 280, x इक्वल्स टू, तो 280 इसका आंसर होगा। अब आप कैलकुलेशन, बेटे कैलकुलेशन तो आपको खुद करनी पड़ेगी, हम तो सिर्फ आपको मेथड सिखा सकते हैं, और कैसे प्लस माइनस करना है भाई वो तो आपको करना ही पड़ेगा। सो दिस इज द वेरी सिंपल क्वेश्चन, you can take the screenshot of this one. I'm showing you another question. Now the next question, in this question you need to calculate depreciation, so hurry up, try to solve depreciation in this question. Again pause the screen, pause the video. Okay, so now in this question you need to calculate depreciation. So again let's make the formula first. Net domestic product at market price and gross national product at factor cost. Gross net minus depreciation, national domestic minus NFIA, again NFIA FIFA minus FITA, प्लस NIT, क्योंकि MP बाहर है तो NIT प्लस होगा, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। बस ये हो गया आपका फॉर्मूला। बेटे फॉर्मूले बनाने नहीं आते तो बेटे मैं आपको बार बार कहूंगा कि पहले आप फॉर्मूले को क्रिएट करना सीखो, जो मैंने आपको पहले वीडियो दी हुई है उससे आप फॉर्मूले को क्रिएट कर सकते हैं। NDP MP है 80,000, GNP एट FC गिवन है आपके पास 75,920, डेप्रिसिएशन आपको कैलकुलेट करना है, उसको एक्सलेट कर लेंगे। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 500, टू अब्रॉड 700, indirect taxes 10,600 and subsidies 1,770। अब आप इसको प्रॉपरली सोल्व करेंगे तो आपके पास x इक्वल्स टू आ जाएगा 4950। बिल्कुल ठीक है बच्चों का जिन्होंने किया है, so this is 4950, perfect answer। You can take the screenshot of this question. Now I'm showing you one more question. This is the question, you solve this one. After that I will give you some homework question, so solve this question now. Pause your screen for solving the question. Now in this question again we are applying the same tactics under the past one. So you have gross domestic product at factor cost and net national product at market price. Again look, those 6 basic point, GN plus depreciation, DN माइनस NFIA। अब क्या माइनस होगा क्या प्लस होगा बेटे, अब तक तो आप एक्सपर्ट बन जाने चाहिए इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद। और अगर आपको ये बेसिक नहीं आता तो मैं बार बार कहूंगा कि पहले आप बेसिक को सीखें। तो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, अब इसमें आपको क्या फाइंड करना है, तो आप देख सकते हैं साफ साफ आपको ये वैल्यू सब्सिडीज की फाइंड करनी है जो मैंने सर्कल की है। अब इसको एक्सलेट कर लो, सारी वैल्यूज आपके पास गिवन है। So 55,000 इक्वल्स टू नेशनल इनकम, ये है आपके पास NP MP 55,500, डेप्रिसिएशन 2,500, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 1,300 और 2 है 600, इसको आप सोल्व करें। इनडायरेक्ट टैक्सेस 4,400 और माइनस सब्सिडीज, सब्सिडीज आपके पास हमें कैलकुलेट करनी है, उसको हमने एक्सलेट कर लिया। अब आप इसका प्लस माइनस करेंगे तो जो x की वैल्यू आएगी दैट शुड बी ₹2,100 crores। So this is the solution of this question. Now I am giving you some questions for homework, और आप होमवर्क में उन क्वेश्चंस को करें और करने के बाद आप अपने आंसर्स को
कमेंट बॉक्स में लिखकर अपने आंसर्स को सेंड कर सकते हैं। Now students, this is your homework. So solve this question number 11 and 12 and आपका जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन को आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर सेंड कर देंगे। इसको सोल्व कर लीजिए, दोनों क्वेश्चन को प्रॉपरली। अपनी स्क्रीन को पॉज करिए और सोल्व करिए। सोल्व करने के बाद आप हमें आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखकर सेंड कर सकते हैं। इसके बाद एक और क्वेश्चन आपको मैं दिखा रहा हूं। 2 क्वेश्चन ये हो गए। देन जस्ट ए मिनट। नाउ solve these 2 questions. These are also your homework question. 13, 14 आप इसको सोल्व करेंगे। इनके भी आंसर्स को आपको मुझे चैट कमेंट बॉक्स में लिख के सेंड करेंगे नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन is this is the question number 15. So this is again your homework question. So after watching the video, you should be able to solve these kind of questions. So this is the question of 15. Solve this and send your answers in chat box. And 2 more questions for your homework. Just a moment. Wait for a minute. Yes. Now, this is the question number 16 and 17. Again, this is the for homework question. So, I hope कि आपको ये क्वेश्चंस करके प्रैक्टिस करके आपको ठीक लगा होगा और इस वीडियो को पूरा कंप्लीटली देखें। थैंक यू।